So the very first topic is directly from NCRT. It's introducing Indian society. Okay. And before we go forward, there are certain key terms, certain key terms, visible hai? Key terms which have come in this chapter. Okay. So in every chapter, we would try to first delineate what are the important key terms. Okay. Very first term is common sense. And how it is different from sociology. Common sense versus sociology. ठीक? Next term is reflexivity. Reflexivity. Third term is social map. I'm doing these key terms because there could be standalone questions इनमें से. ठीक? Then these two terms are not given in your NCRT, they are given in your ISC book, and the terms are microsociology and other is macrosociology. Microsociology and macrosociology. Then next term is community. Okay. So now we'll start with common sense. What do you understand by common sense? Basic knowledge that everyone has. So this is the beauty of sociology, that when you start doing sociology, you do not start from the scratch or zero. You have some idea, some knowledge. Okay. For example, when you visit a temple, you know you have to remove your shoe. Okay. That is a common sense. Okay. Yeah. For example, earlier everybody used to believe that Earth was its center. Okay. Earlier. And other planets used to revolve around it. This was the common sense. But then when science came in, it changed this common sense. So is common sense always right? No. So that is why you need sociology. Because a lot of times the common sense might be right, might be wrong. But there are problems with common sense. Firstly, it is not a universal view. It is not a universal view. For example, I gave you example of removing shoes from temple. There might be certain religion somewhere जहाँ पे शू पहन के प्रेयर पे जाना अलाउड होगा. तो is common sense universal? No. Universal means applying similarly all in every sphere. Secondly, since this is not universal, there are chances that it is partial also. ठीक. पार्शियल के दो मीनिंग है यहाँ पे. एक तो इनकम्प्लीट है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये एक ही व्यू ले रहा है या बहुत लिमिटेड व्यूज ले रहा है.
because I told you this is not universal. Okay. And other is, this is biased view. You may think that your culture or food habits that you follow are the best in the world, or they are better than as compared to your neighbor or something. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है. पार्शियल, व्हाट डज इट मीन? इनकम्प्लीट एंड बायस, बोथ आपको मार्क करके आना है. अगर प्री में उसमें आपके सीयूईटी में इफ देयर इज अ क्वेश्चन that what is common sense, why, what is the problem with common sense? The problem with common sense is it is partial. And what does you mean by partial? It means incomplete as well as biased. Okay. And when I'm saying common sense is not universal, that means it is particularistic. ठीक है. What is particularistic? मतलब एक किसी बंदे का व्यू है और इट इज अ व्यू ऑफ सम स्मॉल ग्रुप. ठीक है. सो इवन सोशियोलॉजी इज नॉट टोटली यूनिवर्सल. ठीक है. सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टेंड टू बी यूनिवर्सल बट इवन दे माइट चेंज. व्हाई? अभी हम आ रहे हैं उसी की तरफ. तो अभी हमने तीन चीज देखी. कॉमन सेंस विच इज पर्टिकुलरिस्टिक, इट इज पार्शियल, दैट मीन्स इट इज इनकम्प्लीट एंड बायस. तो ये तीन चीज आपको कॉमन सेंस के बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है. मूविंग ऑन. दैट्स व्हाई व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सोशियोलॉजी you have to unlearn a lot of things. ठीक. For example, we all know that women have better survivability than men. Okay, they are made that way. But when you will look at the demographic data, we find that sex ratio overall is not in favor of women. So common sense would say that since women have greater survivability and adaptability, sex ratio should be favorable for women. But sociology tells no. Your demography tells no. Sex ratio is adverse for women. That there are sociological reasons for that. For example, इंडिया का स्पेसिफिक है डाउरी. ठीक है. सो स्टिल women are getting killed for dowry. Second है because of dowry there is a son preference among parents. ठीक है. And even if a girl child is born, they do not care for them so much, so they might die eventually. ठीक है. So this is the difference between common sense and sociology. But is sociology able to give you complete view? No. But what happens is, since I said common sense, you are looking at things from one perspective only, one vantage point. मेरा व्यू क्या है या मेरी कम्युनिटी का व्यू क्या है, बस. Sociology goes ahead and it allows you to have multiple views. Okay, multiple views. So कॉमन सेंस का व्यू क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा यूनिलेटरल व्यू हो जाता है, एक ही व्यू. ठीक है. सोशियोलॉजी अलाउज यू टू हैव अ कंपैरेटिव व्यू या कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स. ठीक. दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंस. ये लिख लो. ठीक है. हाउ डज सोशियोलॉजी डू दैट, गिविंग मल्टीपल या कंपैरेटिव व्यूज? So we'll come to, so first term is clear, common sense versus sociology. Now how sociology does that? So there is a term, second term is reflexivity. Okay. इसी से जुड़ा हुआ है एक दूसरा वर्ड, phenomenology. So this is not given in NCRT, this is given in NCRT. ठीक है. Reflexivity. So I'm reading this passage, then I'll make it clear. ठीक है. तो sociology can show you what you look like to others.
It can teach us how to look at yourself from outside. This is called self reflexivity or sometimes just reflexivity. This is the ability to reflect upon yourself, to turn back your gaze and back towards yourself. This self inspection must be critical, that it should be quick to criticize and slow to praise oneself. So basically, we are trying to look at ourselves from the perspective of others. Like there are two friends A and B. Yeah, क्या है Sita and Geeta. So Geeta would try to look at herself from the perspective of Sita. So this is you're reflecting upon from that perspective. Should it be uncritical? No, it should always be critical. क्योंकि तुम कहीं ना कहीं तुम खुद को देख रहे हो, भले दूसरे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, देयर आर चांसेस दैट यू विल ऑलवेज बी प्रेज वर्दी फॉर यू. ठीक है, जैसे वो करीना कपूर सेज ना, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ. तो सिमिलरली, ओके, सो you can write this point that reflexivity should always be critical. Okay, so this was the second term. Reflexivity is looking upon yourself from the perspective of the others. And similarly, phenomenology means that you should get into the shoe of the other person to feel their pain, their perspective, their views. Okay, so if tomorrow you want to do a field work of a farmer, कि भाई फार्मर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आपको फार्मर बनना पड़ेगा, एक दिन जाके खेती करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट वी कॉल फिनोमिनोलॉजी. Okay, so we did second term also, reflexivity. Now coming on to third term, which is social map. Okay, now what is map? Map is more like a geographical thing. Okay, so if you say I am living in Gurgaon, तो जैसे ही आपको गुड़गांव क्लिक किया तो यू विल गेट टू नो कि भाई ये इंडिया के यहाँ कहीं दिल्ली के पास इस पोर्शन में है. ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है, ऐसा सब ये आया. तो दिस इज अ जोग्राफिकल मैप और अ फिजिकल थिंग अबाउट अ लोकेशन. ऐसे ही व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल मैप, बेसिकली इट शुड टेल यू अबाउट व्हाट इज योर क्लास, whether you belong to upper class, lower class, middle class, lower middle class. ठीक है, सेकेंड इट विल टेल यू अबाउट योर कास्ट. ठीक है, what caste you belong to, upper, lower. This will also tell you about your age structure, whether you are young, old, very old. ठीक, तो social map is basically letting you to locate in the social structure of a society, कि आप सोसाइटी में कहाँ बिलोंग करते हो, कहाँ स्टैंड करते हो. देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू टेल यू इज देयर एनी कॉमनैलिटी, डू यू बिलोंग टू सम कम्युनिटी और नॉट. ठीक है, तो जैसे मैंने कास्ट बोला, ये क्या हो गई, एक कम्युनिटी हो गई. ठीक है, so social map actually, and then when you try to develop social map, you also get a hint of social relationships. ठीक, तो social relationships क्या होती हैं? For example, uh, we generally talk about that the younger generation, ऐसे एक व्यू मानते हैं कि if in west younger generation does not treat the older generation, जिनको हम geriatric बोलते हैं, ये टर्म भी लिख लो. ठीक है, geriatric, GERIATRIC, these are like older generation. तो मान लो वेस्ट में इफ वी आर लुकिंग फॉर जस्ट वन फैमिली, ठीक है, जस्ट वन फैमिली लेवल, तो वहां पे कोई बच्चे हैं वो अपने बुजुर्गों को बेटर ट्रीट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इज दैट अ सोशियोलॉजी? नो, दैट इज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम. इंडिविजुअल इशू है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है. बट व्हाट इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड
दिस फिनोमिना ऑफ मिसट्रीटमेंट बीइंग मेटेड आउट टू ओल्डर जनरेशन. मान लीजिए वेस्ट के पूरे गांव में यही चल रहा है या पूरे यूएस में यही चल रहा है, then when you try to understand this phenomena, this becomes social phenomena. ठीक है, नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल. एंड सिंस दिस इज अ सोशल फिनोमिना, तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन यंग एंड गैरिएट्रिक पॉपुलेशन, दिस इज अ सोशल रिलेशनशिप. और यहाँ पे जो सोशल मैपिंग कर रहे हैं हम किसके किसके बीच में कर रहे हैं, यंग एज वाइज कर रहे हैं सोशल मैपिंग. तो देखो सोशल मैपिंग से यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द सोशल रिलेशनशिप, व्हाट इज द सोशल फिनोमिना हियर, who are involved, who are not involved. This is the importance of social mapping. Basically, social mapping tries to identify you if there is an underlying social issue, social phenomena, etc. Okay. So there is a statement by C. Wright Mills. There is a statement by C. Wright Mills. ठीक है, लिख लो, लिख लो. Sociology can help you to map the links and connections. Sociology can help you to map the links and connections between personal troubles and social issues. Between personal troubles and social issues. Okay, so what do you mean by this statement? Hmm? Yeah, I mean, for example, do you remember, do you know Emile Durkheim's theory of suicide and all? ठीक है, उसमें initially, like, if you are not studying a phenomena, you might think that people who are depressed, it's an individual reason only. They might not be getting good friends, they might not be getting good food, or there could be multitude of reasons for that. And even you might think this is just a personal trouble, personal issue. But then here comes the sociology. ठीक है, तो Emile Durkheim did a study and he said that suicide is also a social phenomena because of rise of modernity. When society becomes modern, your lifestyle becomes very isolated and all. You think you are connected to a society, but generally you are living a very lonesome life, loneliness and all. That could be a reason of depression, that could lead to suicide also. ठीक है, तो सोशोलॉजी एक्चुअली हेल्प्स अस टू डू दैट. तो सी राइट मिल्स का ये स्टेटमेंट है, आई थिंक मैच मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. बिकॉज देयर वुड बी, देयर जैसे आगे विल डू, देयर इज अ स्टेटमेंट बाय मैल्थस. ठीक है, हु गेव फेमस पॉपुलेशन डेमोग्राफिक थ्योरी. ठीक है, तो ऐसे आपको मतलब बॉक्सेस में या कहीं दिया हुआ है, तो देयर कुड बी अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दैट सेंस. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ now we have identified that social mapping helps you to understand social phenomena, social relationship. तो हमको दो तीन एनसीईआरटीज में ही जो चीज़ें मेंशन्ड हैं सोशल इश्यूज या सोशल फिनोमिना, पहला है जनरेशन गैप. ठीक है, तो जनरेशन गैप इज व्हाट, इट्स अ सोशल फिनोमिना बिकॉज इट इज कॉमन टू मेनी सोसाइटीज एंड इट फॉर मेनी टाइम पीरियड्स. ये लिख लो. Why this is a social phenomena? Because it is observed in many societies and over a great period of time. ऐसे ही दूसरा कौन सा है सोशल फिनोमिना, अनएम्प्लॉयमेंट. Why? Why unemployment is a social phenomena? Because it shows the changing occupational structure of a society. ठीक है, जैसे कि मान लो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. ठीक है,
artificial intelligence is, there are predictions that it will take up many jobs. ठीक है, so role of artificial intelligence in a society is a social phenomena then. ठीक है, because taking up many jobs. Similarly, next जैसे social phenomena है casteism. ठीक है, what is casteism? That some so-called upper caste believe that the so-called lower caste is inferior to me. This is casteism. ठीक है, next social phenomena is communalism. ठीक है, communalism is what? Again, yeah, and this is like very chauvinist view of religion and all. You are believing that my religion is better, and generally in Indian context, communalism is believed to be very violent form of communalism. ठीक है, तो ना ये दो डेफिनेशन लिखो आप, सबसे पहले कम्युनलिज्म की डेफिनेशन लिखो, इसमें ये पीछे में दी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस भी आए हैं एनसीईआरटी से, तो राइट द डेफिनेशन। chauvinism based on religious identity. chauvinism. What is chauvinism? Chauvinism is excessive or prejudicial support for your mission or for your cause or for your community. ठीक है, तो communalism means chauvinism based on religious identity, full stop. The belief that religion, the belief that religion supersedes all other aspects of persons, the belief that religion supersedes all other aspects of persons or groups identity. ठीक है, तो अगर आपकी कोई और आइडेंटिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी रीजनल आइडेंटिटी है कोई, कि आप मान लो आप बोलो कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन वो रीजनल आइडेंटिटी से भी ज़्यादा सुपीरियर आपकी रिलीजन की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, सो कम्युनलिज्म इज दैट थिंग, दैट यू आर ready to forget that you belong to certain region because you think your religion has a superior identity or a superior standing as compared to your regional identity. ठीक है, इसी में लिखिए आगे, यूजुअली यूजुअली इट इज accompanied by, usually it is accompanied by an aggressive and hostile attitude, an aggressive and hostile attitude towards persons and groups of other religious, towards persons and groups of other religious or non-religious identities. Other religious or non-religious identity. ठीक, तो ये इश्यूज स्पेसिफिकली दे हैव बीन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ठीक है, अब हमको एक नेक्स्ट टर्म देखना है, एक मैंने मिस किया है टर्म, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, वही कॉमन सेंस से ही रिलेटेड एक टर्म है। तो सी, कॉमन सेंस हमारा हमने स्टार्टिंग में किया था कि कहाँ से डेवलप हो रहा है, यू नो ऑलरेडी। तो कॉमन सेंस आता कहाँ से? स्कूल से आ गया, फैमिली से आ गया। सो दिस इज आवर ऑटोमेटिक वे ऑफ सोशल मैपिंग और डूइंग सोशल मैपिंग। यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड फॉर दैट, दैट इज वाई इट इज पार्शियल। ठीक है, सो हाउ डज सोशियोलॉजी हेल्प्स? सोशियोलॉजी हेल्प्स इन ड्राइंग न्यू सोशल मैप्स। ठीक है, वन विच इज नॉट ऑटोमेटिक और गिवन टू यू और टोल्ड टू यू बाई अर्ली फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? एक तो आपका होता है फैमिली, देन स्कूल। ठीक है, बट देन देर आर चांसेस यू माइट बी
अटेंडिंग वेरी एलीट स्कूल, तो वहाँ पे जो पुअर हैं या डाउन ट्रॉडन हैं, ठीक है, फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, दे माइट नॉट बी अटेंडिंग दैट स्कूल. Again, your social mapping is restricted, your perspective of seeing things is restricted, because you're seeing only from a limited uh, view, or the limited number of people who are almost belonging to your own status. So sociology will help you to develop new social map, new social perspective, so that you are better able to understand the perspective of others also. ठीक है, तो ये भी एक सोशियोलॉजी का वो है. ठीक है, अब इसी से एक रिलेटेड टर्म है सोशियोलॉजी जो है, इट कैन बी डन एट टू ब्रॉड लेवल्स. वन इज मैक्रो सोशियोलॉजी, MACRO, ठीक, एंड अदर इज माइक्रो. तो एज द नेम सजेस्ट, मैक्रो इज लार्ज स्केल फिनोमिना. ठीक है, लिख लो. मैक्रो सोशियोलॉजी refers to the study of large scale social phenomena, comma, structures, comma, processes, which also includes which also includes large groups and collectives, comma, major organizations, comma, institutions, and 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 a comparative historical analysis of many societies, and a comparative historical analysis of many societies. ठीक, फॉर आप ऐसे समझो इसको एज एन एग्जाम्पल. देखो, साउथ एशिया भी पूरा कॉलोनाइज्ड हुआ था, ब्रिटिशर्स ने किया. उधर चाइना माइना में भी कुछ ना कुछ किया ब्रिटिशर्स ने. सो व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी वर्सेस ऑन चाइनीज सोसाइटी, आप ब्रॉड लेवल पे नहीं कर रहे हो, एकदम मैक्रो लेवल पे कि पूरी इंडियन सोसाइटी पे क्या था, पूरी चाइनीज सोसाइटी पे क्या था. दिस इज मैक्रो सोशियोलॉजी. ठीक है, एंड देन लास्ट लाइन जो लिखी है ना, कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ मेनी सोसाइटीज, तो जब आप चाइना और इंडिया कंपेयर करने बैठोगे, ठीक है, क्या आउटकम निकला ब्रिटिश के रूल का, या कैसे क्या डिफरेंसेस हुए, तो दिस इज ऑल्सो मैक्रो सोशियोलॉजी. ठीक है, एंड एज अपोज टू दिस, राइट, माइक्रो सोशियोलॉजी इज it focuses on it focuses on the social behavior, comma, interaction of individuals, comma, small groups and events. Interaction of individuals, small groups and events. ठीक है, तो जैसे कि टेक एग्जांपल, जैसे कोविड आया अभी. ठीक है, तो अगर कोविड का आप वर्ल्ड वाइड फिनोमिना लोगे या इंडियन लेवल पे लोगे, ठीक है, हाउ पीपल बिहेव्ड, वो मैक्रो व्यू हुआ. ठीक है, बट अगर आप कोविड का इफेक्ट एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ठीक है, जैसे कि अभी एक मूवी आई है ना, नंदिता दास कपिल शर्मा की, जुगाटो. ठीक है, सो इन दैट मूवी, व्हेन डायरेक्टर इज फोकसिंग on the family life and interaction between husband wife and their child within the family, this is micro sociology. But when the husband goes out to earn money, and how everybody else is treating or mistreating him,
ठीक है, दैट कुड बी अ मैक्रो सोशियोलॉजी, क्योंकि आप सिर्फ दो लोगों के फैमिली इंटरेक्शन को नहीं यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन अ लार्जर सोसाइटी। ठीक है, तो वो मैक्रो हो गया और फैमिली लेवल पे माइक्रो हो गया, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नाउ दिस इज द बेसिक आपके टर्म्स हो गए। एक और डेफिनेशन लिखिएगा कम्युनिटी की। ठीक है, लिखो, इट इज अ जनरल टर्म, it is a general term for any distinctive group. It is a general term for any distinctive group whose members are connected to each other, by consciously recognized commonalities, consciously recognized commonalities and bonds of kinship। ठीक है, किनशिप क्या होते हैं, ब्रदरली बॉन्ड्स एंड ऑल। ठीक है, बेस्ड ऑन ब्लड, bonds of kinship, comma language, comma culture and so on। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। बिलीफ इन दीज कॉमनैलिटीज, बिलीफ इन दीज कॉमनैलिटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपने मन से मान लिया कि यू बिलोंग टू सर्टेन कम्युनिटी, तो दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस यू आर मेकिंग। आपने कोई कॉमनैलिटी ढूंढ ली एंड देन यू आर सेइंग कि अपन भाई भाई। ठीक है, सो यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू बिलोंग टू सम कम्युनिटी, दैट इज एक्टिव चॉइस यू आर मेकिंग। And apart from that, there could be relationship with respect to culture, language, and your kinship ties. This is community. तो इसमें बिलीफ रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन शोइंग कि एक्चुअली कोई प्रूफ है कि नहीं है ऐसा। ठीक है, तुमको लगता है कि ये मेरा भाई है, बस। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। ओके, नाउ now we'll actually start sociology in Indian context only। ठीक है, तो इसमें हमको ये जानना है कि इट इज जनरली बिलीव्ड बाय academicians, by historians and everybody that before advent of Britishers, before advent of Britishers, India was generally what? Medieval society, मतलब मॉडर्न नहीं थी। ठीक है, वी हैड आवर ओन कास्ट सिस्टम, दिस दैट, नो इक्वालिटी। With the advent of Britishers, what happened was there was an emergence of middle class, which was English speaking, okay, mostly urban। ठीक है, मिडिल क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग, मोस्टली अर्बन, एंड जब किसी को पढ़ाओगे और जो उनको अर्बनाइज करोगे, दीज वेर द वन हु कैरीड आउट द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। ठीक, तो ये लिंक्ड है नेश, तो एनसीईआरटी इज वेरी क्लियरली in one of the paragraphs it's saying that it were the Britishers, लिख लो पहली चीज, it were the Britishers who unified India for the first time। ठीक है, in what terms? इकोनॉमिक, दूसरा लिखो पॉलिटिकल, एंड तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक,
But was it beneficial for India, blessing for India? No. So this unification comes at a great expense, at a great cost also. ठीक है? And that cost we are still paying as of now also, because a lot of problems of Indian society are the outcomes of British rule in India. ठीक है? For example, poverty, the biggest thing. ठीक है? तो यही वो कह रहे हैं. But the main takeaway of this is that colonialism gave birth to its own enemy, which is nationalism. ठीक है? How? I told you, Britishers came, they wanted some client class, तो उन्होंने मिडिल क्लास डेवलप किया. दे वर इंग्लिश स्पीकिंग, मोस्टली अर्बन पीपल. ठीक है? सो दे यूनिफाइड टुगेदर. दे वर द फर्स्ट वन टू कैरी आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है? उसको फैलाया भी उस आइडिया को. एंड इवेंचुअली दैट नेशनलिज्म बिकेम antithetical to the idea of colonialism, and finally we got independence. ठीक है? Also, ये जो अगर हम कह रहे हैं कि अर्बन है या इंग्लिश स्पीकिंग है, दे आर मॉडर्न. ठीक है? बट इंडिया की जो मॉडर्निटी है वो बहुत स्पेसिफिक है. इंडियन मॉडर्निटी ऑल्सो गिव्स राइज टू इंटरेस्ट इन इंडियाज ट्रेडिशन. इंटरेस्ट इन इंडियाज या इंडियन ट्रेडिशंस. ठीक है? क्योंकि आप अब पढ़ लिख लिए हो, दे आर ट्रांसलेटिंग बुक्स इन इंग्लिश एंड ऑल, यू आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड. पहली चीज. दूसरी चीज, आपको ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज आकर हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इट इज हाई टाइम वी शुड कंजर्व एंड प्रिजर्व अवर ट्रेडिशन. तो दैट्स व्हाई यू हैव हाइटेंड इंटरेस्ट इन नोइंग द ट्रेडिशन. ठीक है? तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दो कॉन्ट्रडिक्टरी आउटकम क्या थे? पहला तो नेशनलिज्म, एंड सेकेंडली मॉडर्निटी अलोंग विथ ट्रेडिशनैलिटी. ठीक है? एंड वी ऑल्सो सी दैट जो ब्रिटिश रूल है, इट इज क्रिएटिंग न्यू क्लासेस. ठीक है? अर्बन क्लास, रूरल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास. क्योंकि काफी लोग नए नए रिच बन गए इसमें, जैसे जमींदार हैं. दे बिकेम अ न्यू क्लास इन देमसेल्फ. ठीक है? क्लास क्या होता है? क्लास इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. ठीक है? हमेशा वो इकोनॉमी से डिटरमिन होगा, किसके पास रिसोर्सेस पे कंट्रोल है. ठीक है? एंड कास्ट जो होती है जनरली, दैट इज नॉट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. अ लॉट ऑफ अपर कास्ट पीपल माइट बी पुअर, दे माइट बी बिलोंगिंग टू लोअर क्लास, बट कास्ट वाइज दे आर अपर कास्ट, उनका स्टेटस हाई है. कास्ट इज अ स्टेटस थिंग. ठीक है? एंड योर क्लास इज मोर लाइक अ रैंकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है? बेस्ड ऑन एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ठीक है? तो ये भी टर्म हो गया हमारा. तो अगर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया इस पे, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे, तो यू शुड नो दैट दिस गेव राइज टू न्यू अर्बन मिडिल क्लास which were educated in English. They were the first messengers of nationalism in India. ठीक है? फिर ये बता सकते हो कि ब्रिटिश रूल क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक क्लासेस एंड अ न्यू कम्युनिटीज. ठीक है? एंड दीज कम्युनिटीज वे बोथ एट द नेशनल लेवल एज वेल एज एट द रीजनल लेवल. ठीक है? अब डेफिनेशन लिख लो कॉलोनियलिज्म की. व्हाट इज colonialism? तो राइट, इट इज एन आइडियोलॉजी, it is an ideology by which a country seeks to conquer and colonize colonize
ब्रैकेट में लिख लो फोर्सिबली और बाय रूलिंग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, एनदर। Therefore, 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 the colony becomes a subordinate part of the colonizer's country. The colony becomes a subordinate part of the colonizer's country and is exploited in various ways for colonizing countries' gain. ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, you are trying to exploit the other country for the gain of the mother country. ठीक है, this is colonialism. Opposed to colonialism, we saw British rule gave rise to nationalism also. Write a definition of nationalism also. ठीक है, इसमें लिखना, it is a passionate commitment, it is a passionate commitment to one's nation and everything related to it. ठीक है, full stop लिखो. One is even biased towards a nation. ठीक है, लिखो. Nationalism is based, nationalism is based on the belief that a common language, religion, history, race, ethnicity, etc. make a community, make a community distinctive and unique. Make a community distinctive and unique. ठीक? You are so biased towards your nation. And how are you identifying a nation? That you have a common language, common race, common history. तो आप देखो जैसे इंडियंस हैं, उनको पूरा ब्रिट नेशनल मूवमेंट जब पढ़ाते हैं, we do that because we want to inculcate that kind of feeling towards the nation, an unbiased feeling that you got this independence by a long national movement which was successful in finally making Britishers go away from India. तो आपको एक कॉमन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, दिस इज नेशनलिज्म. ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू टेल व्हाट, that we have the right to self determine, we have the right to self rule. A colonizer cannot come and tell us how should we live our life, how should we use our resources, etc. तो यही कॉन्ट्राडिक्टरी आउटकम निकले कि कॉलोनियलिज्म तो था बट नेशनलिज्म भी, इट इज बिलीव दैट इट वाज एन आउटकम ऑफ ब्रिटिश रूल ओनली बिकॉज दे यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली. तो अगर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है यू शुड नो दिस. सेकेंडली, इसमें जो हमने तीन डेफिनेशन की, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म नहीं किया अभी हमने ना, किया कम्युनलिज्म, नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड कम्युनिटी. ठीक है, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए बिकॉज क्यूईटी में देवर क्वेश्चंस, दे पुट अ डेफिनेशन एंड देन दे गिव फोर ऑप्शंस कि इसमें से डेफिनेशन किसकी है. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो बीइंग आस्क्ड. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी. वी आर डन विद दैट. टुमारो वी विल स्टार्ट द डेमोग्राफी चैप्टर, दैट्स क्वाइट लॉन्गर चैप्टर. एंड इसके क्वेश्चंस जो हैं दिस आई विल डिस्कस टुमारो. एंड शायद अगर होगा तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी क्वेश्चंस की. ठीक है, सो दैट वाज इट इन द इंट्रोडक्टरी क्लास. हैव अ गुड डे.